Yes, I have started recording. Yeah. So this is a recap from our previous classes. List, tuples, set, and dictionaries. Dictionaries, again, a data collection with key values pair. Dictionary is a collection which is ordered. Okay, ordered. I have already discussed what is ordered. Ordered means suppose you have started with something in a particular order, then after doing some operation you will have the dictionary in the same order. Okay, and these are changeable and does not allow duplicates. Okay, so duplicates we can't allow. Okay, Python 3.7 dictionary are ordered. मैंने I think discuss किया था in the last class, but previous version of Python the dictionaries were not ordered. ठीक है, so this is recap. This is the simple format. This is an example. See, this is curly bracket means either set or dictionary, either set or dictionary. How to differentiate in the Excuse dictionary? me. Yes. So can you like revise sets again? Because Okay, okay, sets again, just a minute. Yes, is it visible, this document? Yeah, this yes. document. Yeah, see, so I'm again recalling once again. We covered list, we covered tuples. After that, we covered sets, third, and fourth is dictionary. Okay. So list, I'm just again revising. List we use this bracket, this bracket. Okay, this bracket. For tuples, we use this bracket. Okay. For set, we use this bracket. This bracket. Okay. Sorry, this bracket. Okay. And see, so this is just an example of set. Curly bracket start, curly bracket end, and you can have anything like 1 2 3. Okay, or so this is just some simple example of set, my set, and having three elements, 1 comma 2 comma 3, and all three are numeric. Okay, and this is not allowed in set. That means we can't use indexing. Just like in tuple or list we can use indexing to access a particular element, but in set it is not allowed. Okay, So set is not changeable. not subscriptable. Okay, so we can't use subscriptable for a set. Also we cannot support assignments. Okay, so like say, yes, we can't change them because we can change whole set. We can change whole set, but we can't change a particular element. Okay, so I can start here. Is it visible? My black screen something. My set is equals to 1 comma 2 comma 3. See, so this is my set print. My set. Yes. See, now I cannot use this. It will give me some error. Set object is not subscriptable. Since this is not allowed, so I can't use this. See, I can't use this. So this is the answer of your question. Set does not support item assignment, so we can't change them. But we can change whole set. You can see. I can write this. We can change whole set. We can't change a particular element. So is it fine? The, does it answer it? Dibyanshi? Hmm, no response. Dibyanshi, किसने आंसर क्वेश्चन किया था? Who questioned? No one is here. I don't know who questioned it. Sorry. Sir, I don't know who questioned it. ठीक है, ओके, सो आई थिंक ये क्लियर है ना? ठीक है, या ठीक है. सो वी कांट यूज दिस सब्सक्रिप्शन, वी कांट यूज दिस असाइनमेंट. ठीक है, वी कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट items in the set, just like here you can see I'm like using this Rohit. So you can see it is a collection of numeric and string data type.
can see. So this is our site here. Clear? Fine? और फाइन या और डिस्कस करना है इसको? प्लीज आंसर. Sir, can you disclose the homework assignment? ये होमवर्क असाइनमेंट. Fifth assignment. Sorry. Fifth assignment. Homework fifth assignment. Yeah, Assignment 5. I will discuss this. Just give me 2 minutes. I will discuss that. Clear? So this site I need to discuss because this is from the previous class. So I just give you a recap of that. Clear? Give me some 5-10 minutes so I can discuss the remaining part of dictionary, and then I will come to the assignments. Fine, friends? Okay, I think मुझे assignments पहले करना पड़ेगा. No problem. See, assignment number 5. Yes. Yeah, take it. Okay. See, so acha, I think many students are facing problem. One of them messaged me on WhatsApp about the bitwise. Yeah. So write a Python program to convert decimal number into its binary equivalent. I think I have discussed the procedure for conversion of decimal to binary. Am I right? This question, where is the doubt? Friends, please ask, where is the doubt? So we have to multiply to 999 Sorry, 999? or bin. No, no, see. Uh, you have a function called bin that will convert a decimal number to binary. But we can't use that inbuilt function. So you need to write your own code. You need to write your own code that will convert your decimal number into binary. Sir, this is an So assignment इसमें of the LMS, right? Yes. आपको you are asking for something different assignment? No. I was just no. I was not asking anything. Okay. I think any one of you just requested to discuss assignment on LMS. Clear? So is it fine? ये वाला question, first question is clear to all of you? At least say yes or no so that I can understand. I need to move forward or I need to stay here. so इसमें रिमाइंडर जब निकालेंगे उसको मतलब इसे लिखेंगे किस टाइप से, तो जैसे पहले जीरो आया फिर जीरो आया तो उसमें मतलब एक साथ कैसे लिखेंगे 0001? ठीक है, देखो आपने आई थिंक लैब अटेंड किया था लास्ट यस सर. लैब में आई थिंक मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन. ओके. सर नेट की प्रॉब्लम थी तो मैं Okay, ठीक है. Just a minute, give me. How many of you facing problem in this question? Just raise your hand. Just raise your hand. So the conversion from decimal to binary wala. Yeah, decimal to binary. Yeah. Okay. Okay. So, okay, then I'm discussing. Just a minute. ठीक है. Okay. In the meanwhile, students, those who already completed this question, so they can try this question. I'm giving you them. Just a minute. Okay, 1 minute. And for rest of the students, I will discuss this conversion. Mm, Okay, yeah. Okay. So in the chat box. Yeah. So now we are discussing decimal to binary conversion. Okay. Okay.
Okay, so this is created. Is it visible? The this page is visible. Yes, sir. Yes, Decimal sir. to, yeah, decimal to binary. If you are facing problem in this, I can use a Jupyter notebook. If you are having some problem in this, Yeah, give me a book. Jupyter notebook. Yeah. Yes, Okay, sir. okay, yeah, Jupyter notebook. Others can start their codes and their assignments also. It is starting, just a minute. I have activated few more questions. Just a minute, my codes in my Jupyter notebook is starting. सर कहेंगे वन असाइनमेंट एट अ टाइम सर, क्योंकि सब एक साथ हो जाएगा तो क्लटर हो जाएगा हम लोग को, सब सॉल्व नहीं See, कर पाएंगे. just a minute, just a minute. In one week, you are having 2 lab. You are having 7 hour credit, 7 hour, 3 lectures, 2 labs, and in each lab, I need to give you a assignment. Actually, this is the criteria. Not this is not set by me actually. नहीं नहीं सर, Clear? मतलब जो आपने चैट पे दिया है वो कंप्लीट करने के बाद देन यू कुड स्टार्ट द कोड सिंगर नो. हाँ, हाँ, या मैं सी मेरा पर्पस ये है कि कोई भी स्टूडेंट आइडल ना रहे, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? अगर आपका वो हो गया है देन आप कोड ज़िंजर वाले कीजिए, मैंने डेडलाइन उसकी अभी सेट नहीं किया, डेडलाइन इज़ संडे, ठीक है? तो व्हेनेवर यू हैव टाइम यू जस्ट डू इट, मेरा ये पर्पस है बस। ठीक है फ्रेंड? ओके सी सो दिस इज़ जुपिटर नोटबुक, थोड़ा स्लो होता है। सी सो द क्वेश्चन इज डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है? ओके सो प्रोसीजर, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द प्रोसीजर, ठीक है? एवरी टाइम वी नीड टू डिवाइड इट बाय 2 and we need to store the remainder, but the question is where to store remainder. Am I right? So see, I'm just taking a string, str, or you can take my decimal, I'm just taking an empty string, okay? Now suppose you want to convert a number, any number, num is equals to int input, enter a number, ठीक है? आपने एक नंबर एंटर किया, नाउ while, नाउ आपको लूप कब तक चलाना है? while this number is greater than 0, while this number is greater than 0, हमें क्या करना है फ्रेंड्स? क्या करना है? सपोज यू हैव एन एंड नंबर लाइक 10, ठीक है? you need to find the binary value, so every time you will divide this number by 2 and you need to store the remainder. Am I right? Yes or no? Yes, sir. ठीक है? So I will take a random r will store the remainder, ठीक है? r is equals to num percent 2, so this will be the remainder, this is the remainder here, and after finding the remainder, our new number will be what? The old number, which is divided by 2, so number will become what? Number will become a number, the this division sign. Yes or no? ये फाइन है ना? Yes. Yes, ठीक sir. है, ये तो हो गया, बट ये जो रिमाइंडर है, बट दिस रिमाइंडर यू नीड टू स्टोर, ठीक है, वन बाय वन. So I am storing this remainder in a string, ठीक है? You can use a list also,
You can use a list also, but I am storing this in a string. ठीक है. अगर if we were learning C programming में we can use array to store this number. ठीक है, because we do not have this number at a particular time. At each iteration we are having remainder and we need to store that remainder. Clear? So every time we need to keep them update. ठीक है. सो मैं ये कर रहा हूँ, माई डी ई सी इज इक्वल्स टू माई डी ई सी. ये आपको याद है, हमने ये पढ़ा था. अ, एक चीज और, तो पाइथन में एरर नहीं होती? पाइथन में वी हैव अ कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग टपल, लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी. और सी प्रोग्रामिंग में दैट इज कॉल्ड एरे. ठीक है, बट लिमिटेशंस है सी प्रोग्रामिंग में. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा, लाइक वो इंटीजर होंगे और फ्लोट होंगे और स्ट्रिंग होंगे. यस बट पाइथन में हमारे पास एडवांटेज है कि यू कैन हैव न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग बोथ टुगेदर. ठीक है, तो ये बेनिफिट. सर एरेज तो आई थिंक पाइथन में भी होते हैं, लाइक हमें क्लास 11 12 में करवाए थे हाँ, एरेज होता है पाइथन। होता है होता है, वो भी होता है, जो हम लोग नमपाई पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस दैट आल्सो. ठीक है, तो वो भी होता है. बट अभी हमें क्या करना है कि जैसे कि हमें ये मतलब रिमाइंडर को वी नीड टू स्टोर. ठीक है, हम कैसे स्टोर करेंगे, हम स्ट्रिंग में इसको अपेंड करेंगे. आपको अगर रिमाइंड याद होगा, सी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस, जस्ट आंसर, व्हाट विल बी द आउटपुट. Got my point? See, A is a string. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है that is a string. This is a string and using the plus we are concatenating a second string at the end of the first string. ठीक है, so here I am writing this my decimal number which is empty. ठीक है, my decimal number is equals to my decimal number plus this remainder, but this remainder is not a string, so I will write this str r. ठीक है, clear? So this will be your final answer, but this is has one drawback. I will discuss what is the drawback here. This is not the final answer. I am discussing one by one so that you can differentiate. ठीक है, and see now, just any example, just write, tell me any number in decimal. 7. 20। 7. 7 का आंसर 111 आएगा. कुछ और बताइए आप. 111 से आई कांट डिफरेंशिएट, like 12, 13, 9. ठीक है, so I'm just entering 13. ठीक है, 13 का what is binary equivalent of 13? What is binary? No, see here, देखिए आप, bin of 13. गलत आंसर आया अभी हमारा and I will discuss why. 1101 1101, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1011, रिवर्स आ रहा है हमारा आंसर. यस और नो? हमारा Yes, sir. because in the process of converting decimal to binary we need to store remainder in the reverse order. ठीक है, बट हम यहाँ पे इसको फॉरवर्ड ऑर्डर में वी आर स्टोरिंग. सो फाइनली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू दिस माई डेसिमल इज इक्वल्स टू माई डेसिमल. इसको हमें रिवर्स करना है, वी नीड टू रिवर्स इट. कैसे रिवर्स करेंगे? Colon, colon, -1. कोलन कोलन -1. नाउ यू कैन सी, इसलिए मैंने 7 आंसर नहीं, 7 का नहीं बोला था, बिकॉज 7 का आंसर क्या होगा, 111, और वो तो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में सेम ही रहता है. ठीक है, इसलिए मैंने मना किया था वो. अब आप देखिए 13 के, थोड़ा टाइम ले रहा है. Why it is taking time? Okay. एक मिनट देखता हूँ मैं टाइम क्यों ले रहा था ये. जस्ट अ मिनट.
13 हाँ हो गया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए नाउ आंसर इज करेक्ट 1100 और यहाँ पे चेक कीजिए आप BIN ऑफ 13 1100 करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द कोड फॉर योर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, बट हियर आप एक चीज और, सॉरी बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, सी ड्रॉबैक, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग हियर, so finally what we need to do here, क्या बात हो रही है भैया, now this is fine, अब ठीक है ना फ्रेंड्स? So if you don't mind, can you click whole code in chat box? यस, ओके, आपको कुछ इसमें दिख नहीं रहा है क्या अभी? मैंने जूम कर दिया, मैं चैट बॉक्स में भी लिख दूंगा, अब दिख रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है फिर? डू यू वांट टू डिस्कस एनी अदर क्वेश्चन? सर हाँ सर यस, सर हाँ वो हाँ ये, इफ एल्स और एलिफ दोबारा बता दो। ओके मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज और मुझे इन्फॉर्म करनी थी आपको, आई थिंक अटेंडेंस की रूल्स, डू यू नो अटेंडेंस रूल? It is not just like your 11th 12th where you need to make attendance in a whole batch. ठीक है, in after 12th, that means in the graduation or post graduation, you need to maintain attendance. Please mute कीजिए, कहीं से आवाज आ रही है। Yeah, so you need to maintain attendance in each subject, you need to make attendance in each subject and each lab. ठीक है, if I am talking about Python you may have criteria of 75 or 80%. Similarly in digital or any other subject, so the criteria is not for the whole batch, or you can say whole class. The criteria for attendance for each individual classes here. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सपोज आपने सोचा है कि यू हैव अटेंडेड 4 क्लासेस टुडे सो फिफ्थ इज नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है। ठीक है, या सो नेक्स्ट इज इफ एल्स। आई थिंक यार कहीं से आप, कैन यू प्लीज कहाँ से आवाज आ रही है ये? Sir, Devrishi God's mic is unmuted. देव ऋषि, ओके, अब ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक मेरा कंसर्न समझ में आ गया ना आपको अटेंडेंस का? ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट देखिए इफ एल्स। ओके सी, if else, ठीक है, so just give me any scenario where you need to use this if else, just सर give me any फॉर क्वेश्चन 2। for question 2, just okay. Some Python program to find sum of digits of a number. सर Oh, फॉर असाइनमेंट 4, दिस इज आई थिंक असाइनमेंट 5। okay, okay, it is opening. Yes, so which question? सर क्वेश्चन सेकंड। ओके सेकंड तो आई थिंक इजी है, थोड़ा और टफ आप पूछते तो अच्छा रहता है। ओके सेकंड आई कैन डिस्कस। See, second is easy question. See, suppose you are having grades, anything you can take na hint.
Okay, input. I think I have discussed this question in class or lab. Enter grades. Grades. ठीक है. Grades. Now you need to apply a condition. If what is the condition here? Grades. What is the condition? Okay, say suppose if grades is greater than 100, then A plus. नहीं तब तो प्रिंट एरर एरर, है. हाँ, प्रिंट प्रिंट एरर। एरर होगी ना. प्रिंट एरर 100 से ज्यादा कैसे ग्रेड्स हो सकते हैं. एरर. प्लीज एंटर ग्रेड्स. ठीक है, तो ये हो सकता है आपका. आई कैन डू दिस इन अ लूप. अगर आपको एवरी टाइम यू नीड टू मेक every time you need to enter gates, so we can do that in loop also. So this will be your error. Clear? Else यहाँ पे एक कंडीशन और भी कर सकते हैं ना. इफ गेट्स इज ग्रेटर देन 100 और और grade is lesser than 0. लेस देन जी आ रहे डी गेट्स लेस देन 0. ठीक है, तो वी कैन यूज दीज टू कंडीशंस. ठीक है, बट समटाइम्स आई हैव रिटन डू नॉट यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स. तब आप क्या करेंगे. यहाँ पे मैंने लिखा है यू नीड टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन में मैंने दिया है डिस्प्ले एन एरर मैसेज अगर ग्रेड्स आपके ग्रेटर देन 100 और लेस देन 0 हैं. ठीक है, देन व्हाट यू विल डू. अगर आई विल टेल यू कांट यूज दिस और तब आप क्या करेंगे. प्लीज आंसर. सर बता दो ये। हाँ मैं बता रहा हूँ, बट मैं किसी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कोई और आंसर देगा प्लीज. अदरवाइज आई विल टेल. Okay, no problem. See, suppose we are not allowed to use this. और ये clear है ना आपको. और we have discussed this. ठीक है. So any one of them must be true or both must be true. ठीक है. Either gates अगर आपके 100 से greater than है और gates less than 0 है, this will give you an error. ठीक है. So now we are deleting this. Now I am adding one more condition. Elif. I will use elif. Now, see if gates are 100 greater than 100, it will gives me an error. ठीक है. Now we will check if gates sorry L if yes. ठीक है. So if gates are not greater than 100, not greater than I think यहाँ पे हाँ ठीक है. If not greater than 100, then I will check whether these are less than 0 or not. If these are less than 0 or not, then again I will say print error messages, please enter correct grades. ये क्लियर है फ्रेंड्स. तो इसको पहले अभी इतना सा रन करते हैं. जस्ट इसको रन करते हैं अभी. ठीक है. सी चलो कितना ग्रेड्स एंटर करना है आपको. सपोज मैंने एंटर किया 102. एरर मैसेज आनी चाहिए. एरर मैसेज. फिर से मैं रन करता हूँ. अब मैं करता हूँ -3. सॉरी -3. एरर मैसेज आनी चाहिए. आई थिंक मैंने एंटर. सी प्लीज एंटर करेक्ट ग्रेड्स ग्रेटर देन 0. तो दो स्टेटमेंट्स इज फाइन. सपोज मैं कुछ और ग्रेड्स एंटर कर देता हूँ 50 जिसकी कंडीशन वी हैव नॉट रिटन yet. सो कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है. नाउ वी आर एडिंग मोर हेयर. वी आर एडिंग मोर. सो व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट कंडीशन. इफ नहीं सॉरी elif. फ्रेंड्स प्लीज आंसर. तो ये आप क्वेश्चन 2 कर रहे हैं. क्वेश्चन 2 3 4 सब मिक्स है. सी जो 4 क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है. वी नीड टू ऐड दिस कंडीशन एक्स्ट्रा हेयर. ठीक है. अगर आपको सेकंड क्वेश्चन करना है यू नीड टू जस्ट डिलीट दिस वन. यू नीड टू डिलीट दिस वन. Yes, so that's why I ठीक. asked. ठीक है. हाँ मैं क्वेश्चन एक्चुअली 4 इज एक्सटेंशन वर्जन ऑफ क्वेश्चन 2. ठीक है. ओके. सो फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे. नेक्स्ट इज
Yeah, so all grades above 95. ठीक है, so then all grades, so L if GRADS grades greater than 95, we will see here print, okay, you got a plus plus. ठीक है, now हम इसको रन करते हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 98 डाल के देखते हैं. देखो ये आंसर हमारा सही हो रहा है. ठीक है, वी विल डू स्टेप बाय स्टेप. हम फिर से रन करते हैं और फिर से हम 102 डालते हैं, देखते हैं अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कोड में. नो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमारे कोड में. फिर हम क्या करते हैं, -3 इनपुट करते हैं, देन चेक करते हैं हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम है. नो, हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज इट फाइन फ्रेंड्स? ठीक है, नाउ वी विल चेक वन मोर कंडीशन, एल इफ, फिर क्या कंडीशन थी, ग्रेड्स. नेक्स्ट कंडीशन बताइए प्लीज. ऑल ग्रेड्स above 90 and below 96. ठीक है, ऑल ग्रेड्स above 90 and below 96. अब देखिए आप से ऑल ग्रेड्स above 90 and below 96, तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस केस. above, इन्होंने क्या बोला, below 96, below 96, then what we need to add here, above 90. ठीक है, see, I will write here this above 90. okay, and print क्या है आपका a. ठीक है, see, if grades are greater than 95 it will go here. ठीक है, if grades are less than 95, if grades are less than 95, ठीक है, और grades are 95 or less than 95, what will happen, this is will go here. ठीक है, and it will check whether this is greater than 90 or not. See, now just give me any input, just give me any input, please answer. 87. ठीक, 87 में कोई आउटपुट नहीं आएगा. सी, नहीं 87 में आएगा नहीं, 87 में कोई आउटपुट नहीं आएगा आपका. 92. हाँ देखा, 87 में क्यों आउटपुट नहीं आया, बिकॉज हमारी फर्स्ट कंडीशन इज ग्रेटर देन 100, सेकंड कंडीशन इज लेस देन 0, नो, थर्ड कंडीशन इज ग्रेटर देन 95, नो, फोर्थ कंडीशन इज ग्रेटर देन 90, नो, तो कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है, अब बोलिए आप 92. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए, तो सॉरी 92 एंटर ए. ठीक है, क्लियर है. Yes, sir. ठीक है सर और इसी में जैसे अगर उसमें दे रखा था बिलो 96 एंड ग्रेटर देन 90, तो उसके लिए 96 वाले के लिए क्या करेंगे? देखो 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 देखो, मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए आप. उसमें लिखा है बिलो 96 एंड अबव 90, है ना. यस सर. ठीक है, सी, फर्स्ट वी हैव रिटन इफ ग्रेड्स ग्रेटर देन 95. if it is greater than 95 then it will go here, otherwise it is always less than equals to 95. it is always less than equal to 95. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये 90 से तो बड़ा है, बट इट इज लेस देन 96 ऑटोमेटिकली. तो इसमें वो कब आएगा, व्हेन इट विल कम हियर, it will come here only when this condition is false. ठीक है, yes or no, this condition false है, मतलब कि ये क्या होगा, it is not greater than 95, so it is always less than equal to 95. it is always less than equal to 95 इसके बाद में. ठीक है, just after this क्या होगा, it is always less than equals to 95. ठीक है, तो जो आपको इसमें साथ में लिखा है ना, above 90 and below 96, तो below 96 वो always रहेगा, because this condition is not false, this condition is not true. ठीक है ना, so this is the purpose of L, this is the purpose of L. ठीक है, L मतलब क्या होता है, else if, मतलब कि if this condition is not, see, अगर ये condition आपकी false है, अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, देन इट विल गो हियर ओनली. ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, व्हेन इट विल फॉल्स, व्हेन योर ग्रेड्स आर लेस देन इक्वल्स टू 95.
ठीक है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हो गया उससे। ठीक, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, और एनी अदर डाउट? एक जो क्वेश्चन था हेलो प्रिंट एज वाला, जिसमें प्लेस होल्डर वाला था, जिसमें हेलो एज प्रिंट हाँ, मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो और वो सर एक उसका जिसमें हाँ बेनेट के सिंगल कैरेक्टर्स को प्रिंट करना था, तो वो वाला भी था। हाँ, मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, STR सपोज मैंने लिया माय नेम रोहित, फिर मैंने एक नंबर लिया 34, फिर मैंने ये लिखा प्रिंट ST, सपोज मैंने ऐसे लिखा ओके, माय नेम इज, अब मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, एंड माय एज इज, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट मैंने ऐसे कर दिया FORMAT फॉर्मेट, आई थिंक स्पेलिंग सही होगी, लेट मी सी। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया STR1 एंड देन आफ्टर मैंने लिख दिया नम। मैं इसको रन करता हूँ। ओके, नहीं तो स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम, इस फॉर्मेट, नहीं 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 नहीं, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे करना था क्लोज, जस्ट अ मिनट। यहाँ see, देखिए, what is the format of this? Format and placeholder. So whatever you want to print, just write in the double quotes, just write in the double quotes. ठीक है, so I want to print my name is, and after that I want to print the name exact string. ठीक है, so I want to print a string, so here I will just write this inverted comma open, sorry curly bracket open, curly bracket close. ठीक है, and then I want to print my age is, or फिर instead of this I want to print that particular value, so here I will just write an inverted comma open, inverted comma close, empty. ठीक है, now I want value of this, and I want value of this. ठीक है, so for that I will use dot, this dot, and then I will write format, I will write format, bracket open, bracket close. ठीक है, and in this bracket I will write my variable. ठीक है, so instead of this I want to print my name, and I have stored my name is str1, so I will write here this str1. ठीक है, in second place, this is the second place. ठीक है, second place I want to print my age. ठीक है, my age I have stored in this num, आप यहाँ पे age कर दीजिए। ठीक है, so I have stored my this is value in my age, so I will write the second variable here, age. ठीक है, so this is called format placeholder. क्लियर है? ओके सर। ठीक है, सर और यस सर। हाँ, अगर आपको कुछ और, जैसे मान लिया आपने फिर से एज कर दिया, और सपोज मैंने कर दिया प्रोफेशन PROFE, prof इक्वल्स टू फैकल्टी, फैकल्टी एंड माय एज, ठीक है, फिर मैंने किया आई एम अ, ठीक है, फिर मैंने ये कर दिया आई एम अ, फिर मैंने यहाँ पे ये कर दिया PROFE। तो जो थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, जो थर्ड प्लेस होल्डर प्रॉफ, प्रॉफ में क्या है, फैकल्टी, तो ये आ जाएगा आई एम अ फैकल्टी। क्लियर? ओके सर, तो सर ये जो फॉर्मेट है और जो ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, तो ये यूज करने जरूरी है इसमें? हाँ, इसकी प्लेस पर ही, फॉर दिस प्लेस, इस प्लेस पर क्या होगा, ये वाला आउटपुट आएगा, फर्स्ट वन। तो सेकंड प्लेस पर क्या आएगा, सेकंड वाला, थर्ड प्लेस पर थर्ड वाला। ठीक है, ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट? सर वो बेनेट वाला था जिसमें उसमें फर्स्ट सिंगल कैरेक्टर्स करने थे, फर्स्ट फोर्थ और लास्ट, वो वाला भी एक बार। आपने आई थिंक क्लासेस मिस करी हैं क्या? नो सर, वो थोड़ी मेरे को है अभी प्रॉब्लम।
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। प्रिंट, मैंने सपोज ये लिखा, व्हाट विल बी द आउटपुट हियर? देखिए बेनेट यूनिवर्सिटी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ प्रिंट COLLEG college. I will write here 0. So it will COLLE, sorry spelling mistake कर दे, yeah. So see, when I will write here 0 in the square bracket, it gives me first character. It gives me first character. ठीक है? Similarly, when I will write here 1, it gives me second character. ठीक है? If I will write here 2, 5, it gives me this. This is the 0, this is the 1, this is the 2. ठीक है? This highlighted one. मैं थोड़ा zoom कर रहा हूँ, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है? Sir, तो so this we this have to 2, write 0 for first character. 0 for first, 1 for second. ठीक है? Yes, sir. अगर आपको कुछ एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए, ठीक है, तो सपोज मुझे चाहिए थर्ड से लेके फिफ्थ तक। थर्ड के लिए मैं क्या लिखूंगा? 2। थर्ड के लिए क्या लिखूंगा मैं? 2। ठीक है? सो इट गिव्स मी एन ई, सो इट गिव्स मी दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 1। ठीक है? 1 माइनस, ठीक है, -1 करेंगे। ठीक है? तो 2, सर ये मेरे को ये समझ नहीं आया कि जैसे 0 फर्स्ट के लिए और थर्ड के लिए सेकंड हाँ करेक्टर। हाँ हाँ, यस। नहीं, ये तो उसका रूल है, दिस इज द रूल, इंडेक्सिंग होती है। ठीक है? दिस इज द इंडेक्सिंग स्टार्टेड फ्रॉम 0। ओके सर। ठीक है? इसमें और देखिए आप, इसमें अगर मैं ऐसे लिखता हूँ -1, -1 देता है लास्ट करेक्टर। देखिए लास्ट वाला आ रहा है, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, देखिए y आ रहा है, यस सर। तो -1 लास्ट देगा। अगर हम -2 करेंगे, कॉलेज -2 क्या देगा? सेकंड लास्ट। देखें, ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ओके, एनी अदर डाउट? I have doubt in STR num. नो सॉरी, The STR num is coming in syntax error. STR num, upper one. दिस वन। This one, syntax error. Syntax error is coming. आपने फॉर्म में चेक कीजिए, यहाँ पे इन्वर्ट, आफ्टर दिस इन्वर्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा वी नीड टू यूज दिस डॉट। मैं एक चैट में सेंड करता हूँ, जस्ट क्रॉस चेक द सिंटैक्स। Okay. ठीक है? वो सिंटैक्स, समटाइम्स आई आल्सो फॉरगॉट सिंटैक्स, आप सिंटैक्स चेक कीजिए। एनी अदर डाउट फ्रेंड्स? Excuse me, एनी sir. अदर? हाँ, यस। Sir, can you discuss assignment 5 का question number 5? ओके, असाइनमेंट 5 क्वेश्चन नंबर 5। Sir, shall I dictate? नहीं, आई हैव सी सी, ये ऑप्शनल बोनस क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन आर फॉर गुड स्टूडेंट, मतलब जिन्हें ऑलरेडी पाइथन आती है, देन दे कैन ट्राई। ठीक है? सो सी, फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज, यू आर वर्किंग ऑन अ रिसेप्शन डेस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट कोड जिंजर। इन दिस 4 to 20 members are allowed in each team. ठीक है? इन ईच टीम 4 to 20 members are allowed. ठीक है? यू आर इंटेंडेड टू फाइंड लार्जेस्ट टीम। आपको क्या फाइंड करना है? लार्जेस्ट टीम। यू नीड अ पाइथन प्रोग्राम वेयर यू कैन एंटर नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच टीम। ठीक है? That has got register, and after entering string done should print size of largest team and the number of team with that size. ठीक है? तो एक्चुअली क्या है, यू आर कंफ्यूजिंग विद द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है कि क्वेश्चन आई हैव रिटन 5-6 lines to confuse you, but it is just a simple question. See, suppose I am on a reception desk. ठीक है?
सो मैं आई एम ऑन अ रिसेप्शन डेस्क एंड सपोज आप लोग ने एक टीम बनाई है, सपोज आपके क्लास में 5 टीम्स हैं, ठीक है। कुछ टीम्स में यू हैव 6 मेंबर्स, इन सम टीम्स यू हैव 8 मेंबर्स, इन सम टीम्स यू हैव 9 मेंबर्स। सो आप लोग मेरे पास आ रहे हैं, यू आर कमिंग, ठीक है, एंड यू आर जस्ट टेलिंग मी नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच टीम, ठीक है। सो सपोज फर्स्ट टीम अराइव्ड एंड दे टेल मी सर वी आर 4 in my team. Second one arrived, sir we are 6 in my team. And third team arrived, sir we are 8 in my team, ठीक है। तो minimum is 4, maximum is 20 members, ठीक है। Suppose there are 5 number of teams, 6 number of teams, any number of teams, ठीक है। So these teams are arriving to me and they are telling the number of मेंबर्स, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, दे आर टेलिंग मी, ठीक है। सो आई एम जस्ट एंटरिंग ऑल द डिटेल्स, ओ दिस इज योर टीम नेम एंड दिस इज द नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। व्हेन ऑल टीम्स अराइव टू मी आई जस्ट राइट डन, आई जस्ट राइट डन, नाउ इट्स इनफ, ठीक है, एंड डन, ठीक है, ठीक है। आफ्टर जस्ट राइटिंग डन आई नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट टीम, आई नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट टीम, गॉट माई पॉइंट? यस सर। ठीक है। तो इनिशियली देखो, अब मैंने जो क्वेश्चन आपको डिक्टेट किया इन दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीम इज नॉट, नंबर ऑफ टीम फिक्स्ड बोल दिया था मैंने 5, बट आपके क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ टीम इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनिशियल यू हैव टू स्टार्ट विद द लूप, ठीक है, और जैसे ही मैंने डन एंटर किया यू हैव टू स्टॉप, तो आपको नंबर ऑफ टीम भी काउंट करना है, ठीक है। सपोज फर्स्ट टीम अराइव टू मी, ठीक है, सो आई जस्ट एंटर नंबर ऑफ मेंबर्स and I have just counted, oh this is first team. Now second team arrived to me, I have counted, I have entered the number of members, maybe 7 number of members, and now I have counted, this is the second team, ठीक है। Similarly third team arrived to me, I have written their number of members, ठीक है, and I have also I have also remembered that, oh this is the third team arrived to me, ठीक है। Whenever no one is coming I just type done, ठीक है। आफ्टर टाइपिंग डन माय सिस्टम शुड गिव मी द नंबर ऑफ टीम अराइव टू मी, ठीक है, 3 or 4 or 5, ठीक है। एंड आफ्टर दिस आई नीड टू चेक विच टीम इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर। फर्स्ट टीम में सपोज 5 थे, सेकंड टीम में सपोज 7 थे, थर्ड टीम में सपोज 6 थे, तो सेकंड, सॉरी, ओ ठीक है। तो क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। बस थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम, लैंग्वेज एक्चुअली क्या है कि कभी कभी एग्जाम में दे ट्राई टू कंफ्यूज यू विथ लॉन्ग क्वेश्चन, बट वो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। यस सर। सर ठीक है, हमको ऑप्शनल बोनस क्वेश्चन भी करने हैं? सॉरी सर ऑप्शनल बोनस क्वेश्चन भी करने हैं क्या? एक मिनट, द प्रोग्राम शुड आल्सो चेक फॉर ह्यूमन एरर इफ वैल्यू एंटर इज ग्रेटर देन 40, और सॉरी इसमें एक चेंज कर लेना, ये ग्रेटर देन 40 नहीं, ये 20 होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे 0 होना, 0 की जगह 4 होना चाहिए, यस सर, वो अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ठीक है। सर हाँ, ऑप्शनल बोनस क्वेश्चन भी करने हैं क्या? ऑप्शनल, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई, सर ठीक है। हमको देना तो नहीं है ना एलएमएस में? अगर आप कर लेते हैं तो आप सबमिट कर दीजिए, इसके लिए मैं मार्क्स डिडक्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट डिडक्ट एनी मार्क्स फॉर दिस बोनस क्वेश्चन के, ओके ठीक है। So I will not deduct any marks for this. So friends, we have spent the whole lecture. I want to discuss dictionary. So I will discuss in next lecture. ठीक है। I will upload one more assignment today. ठीक है। So every week you have 2 assignments. ठीक है। Because we have 2 labs, so we need to complete 2 assignments. Any doubt, friends? Yeah, Devosi Datta, you were asking something. Yes, sir, I was. Yeah, so in the whole lecture, so what is your doubt? The main doubt actually it's bitwise, so that's why I Okay, didn't disturb the entire lecture. I okay, was okay. thinking मैं class के बाद पूछूंगी. I think in the lab we can discuss. Lab? ठीक है, हमारी लैब है ना आज? Um, Sir, yes, Brad, हाँ हाँ. Last class है.
हाँ, लैब 1 बैच 1 की लैब है ना आज? Yes, sir. हाँ, तो आप सो यू आर इन बैच 1 और बैच 2? I'm in batch 1. बैच 1, ठीक है।